this webinar with collaboration from JNV Kendrapada Alumni Association. So let me introduce our guest to you. Our guest is Major Dr. Rajesh Kumar Mishra. His MS DNB in gynecology, and he is an assistant professor in Armed Forces Medical College, Pune. He has graduated from AFMC Pune, commissioned into Indian Army in 2011. He has MS in Obstetrics and Gynecology, AFMC Pune, DNB from NBE. He is Assistant Professor in Department of Obstetrics and Gynecology at AFMC Pune. And he has also received too many accolades, let me tell you. He has received the Major General Nirmala Ahuja Gold Medal for scoring highest marks in MS in Maharashtra University of Health Sciences, Nasik. He has got AFMC Gold Medal for standing first among all defense candidates in India in MS. He is a recognized UG and PG teacher, and he has he is a peer reviewer of many journals and has many national and international publications to his credit. So, sir, we are very happy to have you with us, and we'd like you to share your knowledge with us. And please, everyone, be on mute. Sir will be starting the PPT. Thank you. Over to you, sir. Thank you, Team Envoy, for giving me this opportunity to come in front of you and share my it's not knowledge, basically share my experience or share my learnings with you. So thank you for the opportunity. Good evening to all of you, and namaskar. I was told to talk to you about menopause and the myths associated with it. So I have divided my presentation into 3 parts, in which I will deal with menopause, what is menopause, and then we'll see what are the basic signs and symptoms by which the patient or any lady will come to know when she is attaining menopause, and then we'll bust some myths associated with it. So we'll start with what is menopause. Before going to menopause, this is our basic, this is the, I won't say myth, this is our perception that menopause is associated with 7 coughs. The patient or the lady feels like itchy, bitchy, stretchy, sleepy, bloated, forgetful, and dried up. So we'll see through our presentation if it is true or some myths are associated with it. So basically, menopause means cessation of monthly periods. It has been derived from the Greek words meno, meaning months, and pause means cessation. So basically, menopause is a retrospective diagnosis. That means it is the patient or the lady is said to have attained menopause once she has 12 months of amenorrhea. Otherwise, that means if a lady has missed 12 monthly periods continuously, then only we can label the lady as menopause or she has attained menopause. So basically, अगर आप मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा तो अगर किसी लेडी के अगर 12 कंटिन्यूसली महीने बंद हो जाते हैं, एमेनोरिया हो जाता है, तभी हम उसको मेनोपॉज बोल सकते हैं. लेकिन ये होता क्यों है? Why this menopause is there? It's basically depletion of the ovarian follicles. So the ovarian functions, certain functions are diminished and it tries, and then gradually it stops. So it leads to menopause. And what is the basic cause of that is there is shortage of ovarian hormones. What are the hormones that we'll see? And how a lady will come to know that she has attained menopause or she is about to attain the menopause? One of the sensitive markers is irregular cycles. At the perimenopausal age, which is between 40 to 50, I'll gradually elaborate. So the lady will start getting irregular cycles. So this is one of the sensitive markers that the lady will be attaining menopause, that she is heading towards menopause. So in 80% of cases, the cycles are gradually irregular and gradually it stops. But in 10% cases, it can. But something I have highlighted, there is no need to conduct any test routinely to diagnose menopause. Okay.
କ୍ଷୀର କଣ ଦେଲେ ନା ଏତେ? Let's see. So this is what I talked about is normal physiological menstruation. A normal lady will go through these phases and that is menstruation. In certain special cases, the menstruation can stop suddenly and that is induced. I mean, in certain cases, Meeting if over the ovaries are removed due to some surgery or by some surgery, then the ovarian function stops automatically. So the lady is induced. It's induced menopause. ये सब Or due to audience chemotherapy or radiation therapy, more in screen cases share of होता है cancer, so the lady's ovaries will stop Facebook live functioning. So the menopause will set in. And there will be no perimenopausal transition in such cases. So menopause has been divided into certain phases. Premenopause, I mean the periods, when a lady gets regular periods, that is called as premenopause time. Menopause. And perimenopause time is from the time 5 years prior to attaining menopause and 1 year after attaining menopause. This is significant what I am talking about because this is the basic period when there are so many changes happening inside the body of a lady. And she is perturbed, disturbed to know कि what is happening, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. So this is the basic phase जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है इसमें. And post menopause is once the lady attains menopause. And climacteric is basically the 2 years before menopause and 5 years after menopause. This is where all the hormonal changes happen. So I was hearing the host talking about the age, so I'll clarify the year. The mean age of attaining menopause is 51 years. So this is from studies, but it can vary from 40 years till 55, 60 years. So let's see, why we are talking about menopause? Is it so important? Yes, it is important. If you see this graph, in 1888, the average lifespan of a lady was something around 45 to 50 years. But gradually, due to economic improvement, social improvement, and advance in medical science, the life expectancy has definitely increased from 45 to 50 till it is reaching somewhere around 75. So, when the life expectancy increasing, it is increasing gradually. That means the ladies in menopause stage is those who have attained menopause. The number of ladies have increased definitely. If you see in 1880s, I mean 19th century, hardly any lady in menopause stage. But now, a lot. I mean, I would say a major portion of ladies do attain in menopause and do travel menopause stage. So the problem burden is huge. It's not a problem burden. It's basically the life expectancy has increased and so is the menopause stage in the lives of the ladies. So why is there so much of changes and so much hype about menopause? We see there are mainly two hormones which regulate our hormonal cycle or menopause. I mean menstrual cycles. जो महीने होते हैं उसमें दो mainly hormones होते हैं, एक estrogen और progesterone. ये दोनों hormones काम करते हैं तभी महीना आता है timely and period होते हैं. So gradually if you see, जब 25 years से लेकर अभी 45-50 years, there's a gradual fall in these hormones, estrogen and progesterone hormones. But the thing to notice is the estrogen falls by 35% from its maximum value. However, progesterone falls by around 75%. So there is a huge gap. One falls by 35%. I mean, estrogen में 35% की कमी होती है. However, progesterone की वैल्यू में 75% की कमी होती है. So जो गैप बढ़ जाता है. So क्या होता है जो estrogen और progesterone का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है. So we have that problem of menopause and the symptoms related to menopause. So we'll see what are the symptoms of menopause that we should know, a lady should know, but others, so that she will be better prepared to handle this transition phase in her life. So these are the mainly important menopausal symptoms: hot flashes, night sweats. There is the gradual changes in the duration, quantity, and frequency of periods. There can be weight gain. There can be problem with micturition, I mean peeing, पेशाब करने में भी दिक्कत आ सकती है, vaginal dryness, a loss of libido. There can be sudden mood changes, sleep disturbances, headache, backache, there is loss of hair, there are many muscle and joint pains in the lady.
feel so uncomfortable with that pill. And what we are trying to do it now, जो हम कर रहे हैं, which involve कि the lady should know what is the symptoms. She should be better prepared. She should be better prepared to undergo this transition. Let's see one by one. What are the genital symptoms? Genital symptoms होते क्यों है कि उनकी genital symptoms से basically जो estrogen हार्मोन है उस पर डिपेंडेंट होता है. जब हमने देखा कि एस्ट्रोजन ग्रेजुअली कम होते जा रहा है तो जेनिटल सिम्टम्स आते हैं. ड्राइनेस वजाइना होता है, वल्वल ड्राइनेस होता है, वजाइनल इरिटेशन होता है, विद प्रोलैप्स भी हो सकता है. यूट्रस किसी के बच्चेदानी भी बाहर आ जाता है. नेक्स्ट यूरिनरी कंप्लेंट्स क्या होता है? देयर इज फ्रीक्वेंसी. सो दैट मींस बार-बार किसी को यूरिन जाना पड़ता है. यूरिनरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस होता है. इनकंटिनेंस होता है. अर्जेंसी होता है. अर्जेंसी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को यूरिन पेशाब करने जाना है और वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसको सडनली अभी तुरंत ही जाना पड़ेगा बाथरूम, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. दैट इज अर्जेंसी. एंड नक्चेरिया टॉकिंग अबाउट इसके रात में भी नींद खुल जाती है क्योंकि यूरिन करने जाना होता है, पेशाब करने जाना होता है. दैट इज नक्चेरिया. एंड देयर इज स्किन एंड हेयर चेंजेस सडनली. देयर इज थिनिंग ऑफ स्किन, ड्राइनेस, लोगों को ड्राई लगता है स्किन, रिंकल्स आने शुरू होते हैं, बॉडी ऑर्डर आता है बिकॉज हॉट फ्लैशेस एंड रात को स्वेटिंग होती है. जो आपने देखा होगा नाखून इनको मतलब ब्रिटल सॉफ्ट हो जाते हैं. फेस में हेयर्स आना शुरू हो जाता है, दैट इज हिर्सुटिज्म. एंड स्कैल्प हेयर भी कम होने लगता है. सो ऑल दीज चेंजेस आर देयर. Coming to weight gain, there is an average of 2.25 kgs weight gain होता है मेनोपॉज में, तो बोलते हैं. एंड दिस इज नॉट बेसिकली बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस जो हो रहा है, एजिंग के कारण होता है बेसिकली, और लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाता है. जैसे हम बोल रहे हैं कि इतने सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अपने आप को जो लाइफस्टाइल है उसमें बंध जाता है. वो अपने आप को बाहर जाना नहीं चाहता है, एक्सरसाइज करना नहीं चाहता है, खाने पे कंट्रोल नहीं हो पाता है. सो ऑल दिस लाइफस्टाइल स्ट्रेस आ जाता है. This tends to lead to weight gain rather than the hormonal changes. So modification क्या कर सकते हैं? Exercise and diet. These are the two things. We'll see gradually. And coming to joint and muscle pain, I was talking earlier also. Muscle pain, joint pain, ये आना थोड़ा आम बात हो जाता है. Bone density कम हो जाता है तो bone fracture होने के chances बढ़ जाते हैं. जैसे mainly जांघ के bones, femur, कमर की हड्डियां, हाथ की हड्डियां, स्पाइन, ये सब कमजोर होना शुरू हो जाता है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. और क्या चेंजेस आ सकते हैं? कान में सुनाई कम हो जाता है, आईज में कैटरेक्ट, मोतियाबिंद आना शुरू हो जाता है, फिर विजन में कोई प्रॉब्लम आता है, टेस्ट एंड स्मेल में भी डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है, गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है किसी किसी को. So इतने सारे नेगेटिविटी के साथ these all I was talking about is physical changes जो होता है. तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या मेंटल चेंजेस हो सकता है जो ग्रेजुअली लेडी को बहुत परेशान करता है. तो मेनली जब पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप होता है 40 to 50, मेनली 45 to 50, उस एज ग्रुप में थोड़े मूड स्विंग्स होना बहुत कॉमन बात है, आम बात है. इरिटेबिलिटी, कभी कभी रोना आ जाना, कभी कभी गुस्सा हो जाना बिना बात के, एंजाइटी होना, फटीग आ जाना, काम करने का मन ना होना. These are all very very common to any lady undergoing this transition phase. There can be memory loss also. ग्रॉसरी आइटम के नाम ही भूल जाते हैं लोग, कभी कभी दूसरों के नाम भूल जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है किसी किसी को, नींद खराब हो जाता है. और मोस्टली लोगों को अपने आप को एंजॉय करने की जो एक क्षमता होती है, जो एक इच्छा शक्ति होती है, वो कम हो जाएगा ग्रेजुअली. लोगों को लगता है कि इरिटेशन आने लगा है एंड दे फील लो, व्हिच इज दैट थिंग जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज लैक ऑफ नॉलेज, देयर इज लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस टू अंडरगो दिस ट्रांजिशन. सो विल सी व्हाट इज देयर एक्चुअली. एंड द फाइनल थिंग व्हिच इज वेरी वेरी pertinent to all these ladies, with our experience we come to know, we see ladies complaining of this very very symptom of hot flashes and night sweats, which is very very common and very very disturbing to any lady. So it's very common that I will say 50 to 70% of women experience this, and 25% लोग, मतलब 4 में से एक लेडी को फिजिकल डिस्ट्रेस होता है, अपने आप को अच्छा नहीं लगता है. एंड ये होता क्या है? ये हॉट फ्लैशेस जो हम बोलते हैं, होता क्या, गर्मी लगती है, सडन गर्मी होती है. सो इट्स ए सडन
ट्रांजिएंट सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड इंटेंस हीट, जो लगता है कि स्प्रेस ऑल ओवर द बॉडी, मतलब एक जगह से शुरू होके हर जगह फैल जाता है गर्मी बॉडी में, चेस्ट, फेस एंड हेड, ये हर जगह फैल जाता है। उसके बाद क्या होता है, इंसान लाल हो जाता है, फिर पसीना आना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद ठंड लगने लगता है। एंड कम से कम ये 2 से 5 मिनट या 3 से 6 मिनट तक चलता है, अपने आप सबसाइड हो जाता है। सो ये एक ना रिपीटिशन होता है ये सिम्टम, एंड लेकिन तो बहुत परेशानी होती है। ऑलमोस्ट 1 साल तक चलता है और किसी के 5 साल तक भी देखा जा सकता है। एंड सबसे कॉमन और बहुत ज्यादा परेशानी किसमें होता है, जिसमें सर्जिकल मेनोपॉज। आप लोग मैंने पहले स्लाइड में बताया कि अगर किसी के सर्जरीज के कारण ओवरीज रिमूव कर दिया तो सडन ट्रांजिशन हो जाता है। जो ह्यूमन नेचर है, जैसे फिजियोलॉजी है, जैसे भगवान ने बनाया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस ट्रांजिशन शुड हैपन, बट समटाइम्स क्या हो जाता है कि सर्जिकल मेनोपॉज इंड्यूस्ड मेनोपॉज होता है, तो दे सडन ट्रांजिशन ऑफ हार्मोन लेवल्स, इसी कारण उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है, मैंने आप लोगों से बात की, ये बताया भी, जैसे हड्डियां कमजोर होने लगते हैं, बोन्स ब्रिटल होता है, फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। सो इतने सारे नेगेटिविटी मैंने आप लोगों के सामने रखा, तो आपको डरा दिया। तो इसे डरने की कोई बात नहीं है, सब में नहीं होता है, ये सब एसोसिएटेड है। फाइनली लेट्स सी द पॉजिटिविटी अराउंड मेनोपॉज। हमने बहुत सारे नेगेटिविटी देख लिया है। सो मेनोपॉज आई वुड से इज नॉट ए पॉज, इट्स जस्ट बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। भलो होता कुछ Look at this picture. Knowing that I kept this picture, so you can see flower के different stages मैंने depict किया है। आप ये चाहिए बट कली है, फूल थोड़ा सा खिला है, अच्छे से खिला है, मैंने मुरझाया हुआ नहीं दिखाया, फूल कभी मुरझाया नहीं दिखाया। So lady has to undergo all these stages, but कभी मुरझाता नहीं है। So this is how we have to take menopause. So let's see. So how to deal with it? And menopause में अगर किसी को कोई problems होता है तो उसका मैनेजमेंट क्या है, कैसे ट्रीट करें? Let's see. तो क्या क्या हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस है? हमने देखा इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन इसका इलाज भी होना चाहिए। मैनेजमेंट क्या हो सकता है? सो क्या हम सबको इलाज करने की जरूरत है? सारी लेडीज को इलाज की जरूरत है? आंसर इज बिग नो। सो ओनली सिम्टोमेटिक लेडीज, अगर किसी को बहुत ज्यादा सिम्टम्स है देन ओनली उनको ट्रीट करने की जरूरत है, नहीं तो नहीं। स्पेशल जगह पे जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जिकल मेनोपॉज होता है किसी को, या किसी को किसी का ओवरीज टाइम से पहले काम करना बंद कर दिया ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, तो उनमें बेसिकली जरूरत है, नहीं तो इट्स ए बिग नो। तो मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है, ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हमारे पास मैनेजमेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज काउंसलिंग। ए लेडी शुड नो इट्स ए नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो ये आम बात है, अपनी हर लेडी की लाइफ में ये फेस आएगा। तो इसमें से एसोसिएटेड जो फियर है, जो डर है, जो एंजाइटी, उसको हमें हटाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनको उनके सिम्टम्स के बारे में बताना है। अगर वो उनको समझ में आता है, दे एक्सपेक्ट ये होने वाला है, इसमें कुछ बुराई नहीं है, इसमें कुछ सिनिस्टर नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, तो देन दे विल बी कैपेबल एनफ टू कोप विथ इट। Lifestyle modification, which is a very important part of this management, to have nutritious diet rich in calcium and protein. I mentioned soy protein, I will see कि क्या है। Then exercise, weight bearing exercise. I have written coffee, smoking and alcohol. These things have to be avoided. कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। विल स्टडी, विल सी कि ये डॉक्टर्स बहुत लोगों को प्रेस्क्राइब करते हैं, हार्मोन्स देते थे। पहले बहुत बड़ा इस पे मीडिया हाइप हुआ था कि हार्मोन्स 2000 जब 21st सेंचुरी के इनिशियल पार्ट में आया, इट्स अ बिग बूम एंड देन ग्रेजुअली now we give hormones to only selected cases and not to everyone. So hormones only in selected cases, not routinely. There are certain non-hormonal therapy I'll talk about and alternative therapies I'll deal in brief.
So basically, I just wanted to clarify there क्योंकि आप लोग जो भी हैं पढ़ाई करते हैं, गूगल करते हैं, तो आजकल गूगल डॉक्टर्स भी बहुत आने लगे हैं, तो क्या है, तो ये जो HRT हर किसी के दिमाग में चलता है, ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, क्या ये लेना जरूरी है, क्या ये लेना अच्छा है, क्या इसके साथ कुछ खतरा भी है। तो बेसिकली जो साइंटिफिक एविडेंसेस है उसके हिसाब से पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ओनली इन सिलेक्टेड केसेस, ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। अगर किसी को बहुत ज्यादा सिम्टम्स है एंड दैट टू ओनली 2-3 सिम्टम्स, हॉट फ्लशेस बहुत ज्यादा है जिसके लिए वो बहुत परेशान है, या जेनिटल या यूरिनरी सिम्टम्स है, देन ओनली इसका कोई रोल है, नहीं तो कोई रोल नहीं है। लॉन्ग टर्म हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी मोर देन 5 इयर्स, या फिर कि कोई हम सुनने में आता है कि ये दिमाग में मेमोरी लॉस को प्रिवेंट करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये अपने हार्ट को तंदुरुस्त बनाता है, ये सब इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो रिकमेंडेड नहीं है। अगर यूट्रस है या किसी का बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं हुआ है तो हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ लेना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैंने सोचा कि बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आए होंगे, बहुत लोग जो पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, टीवी शोज एंड मीडिया है, गूगल, तो उनको दिमाग में आया होगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। सो बेसिकली 2-3 चीजें हैं, एक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजन, these 3 things are available as hormone replacement therapy. So I talked about alternative therapy. तो alternative therapy क्या है? फाइटोएस्ट्रोजेंस। बेसिकली हमने देखा कि लेडी को जो सिम्टम्स है जस्ट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन की कमी के कारण, एंड फाइटो मींस प्लांट्स, सो द एस्ट्रोजेंस derived from plants are also beneficial. So we'll see कि क्या है। There are so many antioxidants and herbs, so they are also very helpful. Let's see. So फाइटोएस्ट्रोजेंस जो मैंने बोला कि प्लांट डिराइव्ड हार्मोन्स, जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में कम हो गया तो हम प्लांट से वो हार्मोन्स ले सकते हैं, एंड दैट इज ओनली डायटरी सोर्सेस। ऐसा कोई टैबलेट या कोई प्रिपरेशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे फोटो दिखा है सोया, आई मीन सोयाबीन, सब देखते हैं, सोया बॉडी खाते हैं, तो सोया के बहुत सारे प्रिपरेशंस अवेलेबल है। सो सोयाबीन्स, तो सोया इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइटोएस्ट्रोजेंस, वेरी हेल्पफुल। Then there are lentils, I mean beans, legumes, तो ये सब चीजें हम ले सकते हैं, तो ये सब हेल्प करता है फाइटोएस्ट्रोजन देने में। और ये फ्लैक्स सीड हम बोलते हैं, अलसी, सो दैट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। Then this is a specific plant, it's called tripatra in Hindi, red clover, so उसके जो स्प्राउट्स होते हैं, so they are also very helpful। अगर आप देखोगे या इसके बारे में रिसर्च करोगे, देयर आर अराउंड 300 प्लांट्स जिसको बोला गया है कि इनमें एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटीज है। सो आई हैव गिवन यू मेनली 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस जिसमें से हमें एस्ट्रोजन की मिल सकती है और जो हमें थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे हर्ब्स के बारे में पता चलता है, हल्दी है, जीरा है, सौंफ, मेथी, इलायची, दालचीनी, केसर, अदरक, ये सब हेल्प करता है। तो ये सब हमने देखा कि अभी तक की हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और क्या क्या हमारे पास कुदरती तरीका है, आयुर्वेदिक सोर्सेस है, जिससे हम क्या कहें नेचुरल सोर्सेस है, जिससे हमें हार्मोन्स मिल सकता है और हम अपने सिम्टम के साथ डील कर सकते हैं एंड कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक। आई वुड से कि व्हाट आर द मिथ्स एसोसिएटेड विद इट, myths, and we will just bust it. Let's see. So I just wanted to see कि before presenting and before making a presentation कि I just did a Google search. What are the myths associated with menopause? And I was very surprised to see. आप लोग देख सकते हैं 17 लाख रिजल्ट्स। सो आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों ने इसके ऊपर लिखा है, इतने आर्टिकल्स आए हैं, इधर न्यूज आए हैं, 17 लाख। सो लेट्स सी कि 17 लाख लोगों ने 17 लाख चीजें जो भी लिखा गया है उसमें से मोटा बड़ा चीज क्या है, व्हाट आर द मिथ्स, एंड विल सी। आई हैव टेकन अ स्लाइड फ्रॉम द इंटरनेट एंड दिस समराइजेस मोस्ट ऑफ द मेनोपॉज मिथ्स एंड विल जस्ट सी कि व्हाट इज देयर नाउ। एक चीज लोग पूछते हैं कि मेनोपॉज ऑलवेज कि 50 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। आंसर इज नो।
हमेशा नहीं होता है, हमने देखा है कि एवरेज इज 51 ईयर्स है, लेकिन इवन 40 से लेकर 60 तक इज प्रीटी मच नॉर्मल टू हैव मेनोपॉज। सेकेंड बोलते हैं कि वेट गेन हमेशा होता है, वेट गेन मेनोपॉज में, आंसर इज अ बिग बिग नो। हमेशा नहीं होता है, आई टोल्ड यू कि ऐसा नहीं होता है, हार्मोनल चेंजेस के कारण वेट गेन होता है। नॉर्मली आप अगर देखोगे, जब एस्ट्रोजन इज द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड योर हिप्स एंड थाइज, तो एस्ट्रोजन कम हो रहा है तो फैट डिस्ट्रीब्यूशन या फैट डिपोजिशन भी कम होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस हम इतना परेशान हो जाते हैं, हम अपना एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, डाइट लेना प्रॉपर्ली भूल जाते हैं, सो दैट लीड्स टू वेट गेन rather than the hormonal changes। एंड द थर्ड थिंग जो पूछते हैं कि क्या सर्जिकल और नेचुरल मेनोपॉज सेम है, आंसर इज नो। मेनोपॉज होना तो ठीक है, मेनोपॉज हो गया, लेकिन सर्जिकल में ट्रांजिशन फेज नहीं होता है जो नेचुरल मेनोपॉज में होता है। सो एंड जो सिम्टम्स होता है वो सर्जिकल मेनोपॉज में थोड़ा सीवियर होता है। एंड द फोर्थ बोलते हैं कि जब मेनोपॉज होता है तो हॉट फ्लैशेस होना फर्स्ट साइन है, कंपल्सन है, आंसर इज अ लिटिल बिट, आई से कि मैंने बताया कि 78% लोगों में होता है, लेकिन ये होना जरूरी नहीं है, एंड ये पहला सिम्टम है ऐसा भी नहीं है। लिबिडो बोलते हैं कि देयर इज डिक्रीज इन सेक्स ड्राइव, आंसर इज बिग बिग नो। ऐसा एस्ट्रोजन होने के कारण लोगों को थोड़ा सा एंजाइटी आती है, बट इफ यू सी देयर इज if you see the other side of the heads, there is no danger of getting pregnant, so there is no, I would say ki there is no chance, or I mean there is no point in discussing there is decreased libido। then there is a doubt कि एक लेडी अपना हार्मोन सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, आंसर इज नो। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन केवल और सिर्फ ओवरी से आता है, ऐसा नहीं है, एड्रिनल ग्लैंड्स है जिससे कम से कम आप बोले तो अराउंड हाफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसमें से आता है, एंड ये कंटिन्यू टू बी सीक्रेटेड। सो ऐसा नहीं है कि सारे हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाता है। क्या मेनोपॉज में खाली फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, आंसर आप लोगों को मैंने बता दिया है, दिखा दिया है। बहुत सारे सिम्टम्स मेंटल भी होता है, साइकोलॉजिकल होता है। और क्या सिम्टम्स और मिथ्स एसोसिएटेड है वो भी हम देख लेते हैं। यू आर डूम्ड फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, लोगों में आता है कि आपको तो हड्डी कमजोर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, आंसर नहीं, आंसर इज नो। कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए, हमें डाइट लेना अच्छे से वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, इसका कोई ऐसे बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। बोलते हैं कि विमेन इन मेनोपॉज हमेशा उसको यूरिन या बाथरूम जाना पड़ता है, आंसर मैंने आप लोगों को बताया भी है, हमने इस डिस्कशन में भी देखा कि हार्मोन्स की कमी होने के कारण किसी को ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। इलाज हमारे पास है, केगल्स एक्सरसाइज होते हैं, कुछ एक्सरसाइज होते हैं, यू कैन जस्ट गूगल इट आउट व्हाट आर केगल एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज क्या होता है, ये क्या करते हैं, अपने जो वजाइनल मसल्स अराउंड द वजाइना होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जो आप कर सकते हैं। ट्रीटमेंट वजाइनल एस्ट्रोजन क्रीम लगा सकते हैं, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। बोलते हैं कि पॉज एक लाइफ में भी पॉज होता है और मेमोरी में भी पॉज हो जाता है, ऐसा नहीं है। मेमोरी लॉस और पॉज इज विथ एडवांस एज, एंड वो मेन में भी दिखता है, ऐसा नहीं है कि खाली वीमेन में दिखता है। सो देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग कि मेमोरी लॉस मेनोपॉज के कारण होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ एजिंग एंड इट इज सीन इन मेन आल्सो। एंड बहुत बड़ा चीज जो जिसके लिए लोग डिप्रेस होते हैं कि बीइंग इन मेनोपॉज मींस आई एम ओल्ड, आई हैव लिव्ड माय लाइफ, आई हैव रीच्ड the ultimate age, but ऐसा नहीं है, age is just a number, your attitude can make a huge difference। मेनोपॉज आपके इससे टाइम चेंज है अपने लाइफ का, and there is so much of possibilities to explore your future। changes in lifestyle can help you, parenting, sexual liberty, freedom from menstruation, लोग इसमें बहुत पॉजिटिविटी देखना चाहिए लोगों को। क्या हार्मोन्स ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, आंसर इज बिग नो। योगा, मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर, हर्बल रेमेडीज मैंने बताया आप लोगों को, ये सब जो छोटा मोटा किसी को सिम्टम्स होते हैं तो इसका इलाज हो सकता है। फाइनली आई वुड से यू डोंट हील ओल्ड एज। ओल्ड एज तो आना ही आना है सबको, आप उसको हील नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, प्रमोट इट एंड एक्सटेंड इट।
ओल्ड एज को एंजॉय करना चाहिए. And few pictures I would like to share with you. We talked about age, we talked about menopause, and I can tell you, Rekha, Hema Malini, Milind Suman's mother, who is running marathon, they have beaten menopause for sure. And other ladies, this is Angelina Jolie, who has her ovaries removed. She has attended surgical menopause. And pretty handsome, beautiful, I would say. And she has overcome age for support. Then there's Malaika Arora Khan, Sushmita Sen, Priyanka Vadra, Madhuri Dixit, all in perimenopausal age group. I feel they are doing a great job in their life. At last, I would say our finance minister also most probably has attained menopause. And she is enjoying her life and doing a great thing for our country and herself. So there is nothing that we should stop at menopause. So this is the end of the presentation named menopause, but this is not the end of life. So this is where I will rest my case and I will finish my presentation. I'll ask my host carry on from here. Any doubts, anything, any questions, I'll be happy to, glad to answer them. Thank you so much, sir. That was a very, very informative session. And such information and knowledge coming from a gynecologist and Dr. Rajesh Kumar Mishra, it's an honor actually. And these informations are real and genuine. We don't really find it while in Google. We don't really find it. And we got it all in one place, in one session. That was really good, sir. And there are some questions, sir. Actually, Deepika Das is asking, is there any special management for PCOS in menopause? Any special management or any special correlation also? Maybe she means that. So PCOS is a different stuff altogether, and PCOS and menopause, there are so many studies have been done. It has no correlation. So PCOS is something different, and even PCOS can continue after menopause also. Menopause is something different, so there is no correlation, I would say. Sir, I think although you have addressed this question, still Savitri has asked that what is the clinical approach to surgical menopause? It's a clinical approach, yeah. So in surgical management, I have already explained that the symptoms will be severe, can be severe in certain patients. If the patient feels the symptoms are so severe that it is affecting her day-to-day activities, her daily life, then only she should go for some treatment in the form of hormonal replacement therapy that I talked about, and that too for a very बोलते हैं कि जितना कम हम ले सकते हैं वो ट्रीटमेंट उतना अच्छा है फॉर ए कम ड्यूरेशन के लिए. शॉर्ट डोज, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लिमिटेड अमाउंट. Sir, I think, sorry sir. Sir, I think Savitri is asking what is the clinical approach to surgical menopause? So clinical approach is कि the symptoms तो आएंगे ही आएंगे. तो अगर सर्जिकल मेनोपॉज अगर किसी को हो रहा है, किसी को ओवरीज निकाल दिया गया है, तो उसको क्लिनिकल सिम्टम्स तो आएंगे, जो हॉट फ्लशिश होता है या जितने सारे मैंने सिम्टम्स समझाए वो थोड़ा सीवियर होंगे ही होंगे. Okay. This is the clinical thing. I feel कि I have answered the question, but what she meant कि the symptoms will be definitely there and treatment might be required. That's it. Another audience has asked that exactly. Okay, do menopause starts after tubectomy? No, nothing. Tubectomy we can start from 22 years of, 22-year-old. Government of India has told us तो हम बहुत young ladies में भी करते हैं. No, menopause has nothing to do with it. Sir, some other questions are also there, like can menopause trigger uterus cancer? No. Answer is big no.
there is decreased estrogen. So I would say there are certain studies which associate hormonal replacement therapy with endometrial cancer or uterine cancer, but menopause as such doesn't cause C endometrial. Sir, and what is the appropriate way to make women, middle-aged women in rural areas or even our mothers to make them understand about menopause? It's a very good question. I'm very glad that you have asked such a question. And the answer is you, me, or hum. So basically, you, me, or hum. So basically, it's a social responsibility. You are doing a great job. And me, I said, the gynecologist, they have to, give the knowledge. And hum means all the society, the political bureaucracy, everything they have to just educate. Health education is the solution and nothing. You asked about our mother and sisters and your relatives, so you, me, and everybody else. So that's how we have to go about it. Sir, if you are ready to take some more questions, Yeah. then. So Gitanjali Panda is asking how to treat with the cyst in pre-menopausal and menopausal age. How to treat the cyst in pre-menopausal and menopausal age. Of course, she has taken advantage of me being a gynecologist. She has deviated from our topic of discussion of menopause. But definitely I'll answer her query. Cyst, there is a different, two broad categories of cyst basically. Simple cyst hota hai, complex cyst hota hai. If it is a simple cyst, so basically it is up to doctors will only decide कि ultrasound करके कि ऐसे simple cyst है या complex cyst है, and simple cyst का भी size देखा जाता है. Most commonly reproductive age group में एक cyst होना है आम बात है. Even menstrual cycle जब होता है, कभी कभी क्या होता है, ovaries के follicle rupture होते हैं, egg release होता है. तो eggs क्या होता है ना, कभी कभी rupture नहीं हो पाते, तो क्या हो जाता है, उसके कारण वो cyst form हो जाता है. सो इससे बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बट कुछ केसेस हैं जैसे कि सिस्ट का साइज अगर बड़ा हो गया 8 से 8 सेंटीमीटर से ज्यादा है या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, तो उसमें कुछ घबराने की बात है. इट माइट बी ए प्रीकर्सर टू सम काइंड ऑफ कैंसर. सो इसके लिए थोड़ा हम और भी जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड वी टेक केयर ऑफ दैट. सो बेसिकली आई वुड से कि 60 to 70% ऑफ केसेस में कुछ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं होता है, जस्ट काउंसलिंग. Yeah. So another Ratan has asked that should we treat DUP of menopause by medication or should we just wait and watch? So I don't know what is DUP. Yeah. I'll just answer his query. I feel from his question he might be a medico or something. So basically DUP means dysfunctional uterine bleeding. So what happens during menopause? There are irregular cycles. So it is very common. I also told you in 80% of cases irregular cycle होना एक the first symptom होता है menopause होने में. So basically if the symptoms are so severe that a lady can't endure or the bleeding is too much, so then only we treat, and treatment is only symptomatic. The blood loss को treat करना है, अगर heavy bleeding है तो उसी को हम treat करने की कोशिश करते हैं. जरूरी नहीं होता है कि हर किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और ट्रीटमेंट भी सिंपल तरीके से होता है, ऐसा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है. अगर इन केस हमें लगता है कि एग्जामिन करके कि या बाकी इन्वेस्टिगेशन करके कि ये जो हम नॉर्मली उम्मीद करते हैं मेनोपॉज में जैसा ब्लीडिंग होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा सीवियर है, तो हम बाकी भी टेस्ट कराते हैं. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो हम कैंसर की बात करते हैं, यूट्राइन कैंसर का भी एक सिम्टम ऐसा होता है. यूट्राइन कैंसर कभी कभी ऐसा प्रेजेंट कर सकता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर to listen to doctor, and if the patient is symptomatic, so symptomatic, then only treatment, and that too symptomatic only, and ऐसा कुछ बड़ी दवाई देने की जरूरत नहीं है. Thank you so much, sir, for addressing so many questions of our guests, of our audience. Sorry. So this has been a very informative session so far. So I'll hand over to Mahesh for a thank you note. Please, Mahesh. Thank you, Prakiji. Thank you, Zareen, for being wonderful host. I would like to thank our esteemed guest speaker, Rajesh sir, for an informative and a great insightful session. This session has really helped all of us to clear many queries which we had. Okay. And apart from that, I would like to extend a heartfelt thank you note to all the participants who have joined and made it a successful session.
I would like to thank Jawahar Navodaya Vidyalaya Alumni Association, Kendrapada, Odisha as well for being associated with this event. I would like to thank the entire Envoy team for organizing one more successful webinar. It's like adding one more feather in the hat. I would request everyone to please fill the feedback form which is available in our chat window. We value your inputs as well as your feedback. So, and I would request everyone to like our Envoy page both on Facebook as well as on our Instagram page. This is all we had today. Thank you once again and stay safe. Have a great evening ahead. If anyone are having any queries, can post. We will later connect with sir and we'll clear all your queries. Thank you again. Have a great evening. Thank you, sir. Thank you, Boy, for organizing this webinar. It was a pleasure talking to you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir.